Hello, dear students. This is my 19th online lecture on magazine illustration. I am teaching you magazine illustration in your 8th semester. These are my online lectures that are very much helpful for your thesis display. You know about me, I am Miss Emma, lecturer, graphic designer, BFA at University of Education Lowmore Campus, Division of Arts and Social Sciences. This is your topic number 11 and the lecture number 19, and the topic is magazine illustration fashion. I am teaching you magazine illustration in your 8th semester as your elective course for your thesis. Anyways, मैंने आपको पहले बताया था कि अब मैगज़ीन इलस्ट्रेशंस की हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं. उससे पहले हमने किड्स मैगज़ीन्स को देखा था, एडिटोरियल्स, नरेटिव्स, एडवर्टाइजिंग, comics and cartoons, and now comes the fashion illustrations magazine. So let's start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and may Allah bless all my students with health and prosperity. Ameen. This is a fashion illustrations. So let's start. You can see the illustrated fashion images, the portraits. Fashion illustrations has been around for nearly 500 years, ever since clothes have been in existence, and there has been a need to translate an idea or image into a fashion illustrations. Not only do fashion illustrations show a representation or a design of a garment, but they also serve as a form of art. Fashion illustration shows the presence of hand, and you are watching on the screens that is a visual luxury. You can see the different colors, the color palettes that is used in the color dresses in fashion. Fashion illustrations has gone from being one of the sole means of fashion communication to having a very minor role. These are the fashion figures. It is a thesis illustration on fashion. Fashion plate is a reproduction of an image such as a drawing or photograph for a magazine or book. Fashion illustrations can made into fashion plate, but a fashion plate is not itself an original work of illustrations. These are the figures on the fashion illustrations. Different clothes have been designed with different colors, the shades, the complementary, secondary, all types of colors has been used. आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक थीसिस डिस्प्ले है फैशन का जिसमें डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं, फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, उनके क्लोथ्स किस तरह से बनते हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और फैशन मेन है क्या. आप लोगों को इस चीज़ का तो बहुत बेहतर अंदाज़ा है कि फ़ैशन है क्या. जो आपकी लुक है, जो आपकी क्लोथिंग है, जो आप पहनते हैं, वो फैशन है. फ़ैशन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आजकल इन है. इसके ऊपर फ़ैशन वीक्स भी आप टीवी पे देखते रहे हैं, और ये हमारे पास लेक्चर है ऑन फैशन इलस्ट्रेशंस. These are the different patterns, the designs on fashion illustrations.
Fashion magazine illustrations. Now, fashion illustration is the art of communicating fashion ideas in a visual form that originates with illustrations, drawing, and painting, and also known as fashion sketching. It is mainly used by fashion designers to brainstorm their ideas on paper or digitally. Fashion sketching plays a major role in designing to preview and visualize designs before sewing actual clothing. फैशन मैगज़ीन्स बेसिकली है क्या? फैशन मैगज़ीन एक आर्ट है अपने आइडियाज़ को जो है वो कम्युनिकेट करना थ्रू फैशन इलस्ट्रेशंस। आप ऐसी ड्राइंग्स बनाएं क्लोथ्स की इसके अंदर पैटर्न्स हों, अपने आप के फिगर्स हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर जो फिगर्स होते हैं वो मेनली किस टाइप के होते हैं, उनकी जो है कलर्स, उनकी क्लोथिंग की कौन सी होती है। आपको स्केचिंग आनी चाहिए इलस्ट्रेशंस फैशन पे बनाने के लिए। और जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो बेसिकली जब एक क्लोथ्स डिज़ाइन करते हैं तो वो फिगर्स के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, इसलिए उनको फैशन स्केचिंग का इल्म होता है कि वो किस तरह से फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अंदर फ़ैशन स्केचिंग करनी है। तो हम इस बात पे आते हैं कि फ़ैशन इलस्ट्रेशन इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फ़ैशन आइडियाज़ इनटू अ विजुअल फॉर्म दैट ओरिजिनेट्स विद इलस्ट्रेशंस। वो इलस्ट्रेशंस जो फ़ैशन पे की जाएं और कम्युनिकेट कर रही हो फ़ैशन, उन्हें फ़ैशन इलस्ट्रेशंस कहा जाता है। फ़ैशन क्या है? आपका पहनना, आपके क्लोथ्स, आपकी एक्सेसरीज़, आप अपने आप को किस तरह से शो करते हैं, मेंटेन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी फैशन। These are some this of the illustrations on fashion. Inner page of magazine on fashion illustrations. These are also the figures on fashion magazines. Vogue magazine featured fashion illustrations on their cover page. The first illustrations for the cover of Vogue was published on April 1, 1947 and was done by Dagmar. वोग फैशन मैगज़ीन्स इंटरनेशनल फ़ैशन मैगज़ीन्स हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर आपको दे चुकी हूँ कि हमारे कौन से इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं जो 1 से लेके 10 तक बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वोग हमारा फर्स्ट फैशन मैगज़ीन है। When there has been a decline of fashion illustrations in the late of 1930s, Vogue began to replace its celebrated illustrated covers with photographic images. This was a major turning point in the fashion industry. Fashion illustration has gone from being one of the sole means of fashion communications to having a very minor role. The first photographic cover of Vogue was a watershed in the history of fashion illustrations and a watershed mark of its decline. Photographs, no matter how altered or retouched, will always have some association with reality and by association truth. हमारा जो फर्स्ट वोग मैगज़ीन था उन्होंने फीचर्ड किया था फैशन इलस्ट्रेशंस को, और वो एक शेड का कवर था, वर्ड शेड का कवर था। दीज आर सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस ऑन फ्रॉम वोग मैगज़ीन्स। These are the inner page of the magazine on fashion illustrations. मेरे इस लेक्चर में यू have understood that what is the fashion magazine. You all know about the fashion. Pakistan is very much now known about the fashion clothes. We have different fashion designers.
all are aware about the fashion. सो जो इलस्ट्रेशंस फ़ैशन के लिए की जाती हैं वो फ़ैशन इलस्ट्रेशंस कहलाती हैं, और फ़ैशन इलस्ट्रेशंस को जब मैगज़ीन के लिए डिज़ाइन किया जाए दैन दे आर कॉल्ड दी फ़ैशन इलस्ट्रेशंस मैगज़ीन्स। हमारे इनर पेजेस के अंदर भी फ़ैशन इलस्ट्रेशंस की जाती हैं, आउटर कवर पेजेस पे भी की जाती हैं, और जो है वो इनर पेजेस पे हमारे स्केचिंग के साथ जिसको भी फैशन डिज़ाइनर बनना है उसको प्रॉपरली इलस्ट्रेटेड फिगर्स जो है वो पोजेस के साथ बनाने आने चाहिए। इनके इसके लिए स्पेशली आपको स्केचिंग आनी चाहिए, जो कि मैं अगले लेक्चर्स में आपको दिखा भी दूँगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर नंबर 19। Hope you have understood all my lectures very well. You can give me the feedbacks on my lectures. Just read them again and again and prepare for your exams. And these lectures are, I am telling you again and again that these lectures are very much helpful for your thesis. So work hard, work at home, do read them. Thank you.